नेक्स्ट क्वेश्चन है रीड द फॉलोइंग फोर स्टेटमेंट A to D about certain mistakes in two of them. Question asked in AIPMT 2011. Statement A. The first transgenic buffalo Roji produced milk which was human alpha lactalbumin enriched. Option second है restriction enzymes are used in isolation of DNA from other macromolecules. Statement D C है downstream processing is one of the steps of rDNA technology. Statement D है disarmed pathogen vectors are also used in transfer of rDNA into the host. अब पूछा गया है which of the two statements having mistakes. So the correct answer is option B. Statement A and B having mistakes. Explanation. A transgenic cow named as Roji produced human protein enriched milk. The milk contained the human alpha-lactalbumin and was nutritionally a more balanced product for human babies than natural cow milk. और बी का आंसर है restriction enzymes serve as chemical knives to cut genes into definite fragments. So these two statements Statement A and Statement B having the mistake. So the correct answer is A and B. Next question है which of the following is incorrect statement? Option first है the first transgenic cow Roji produced milk which was enriched with human alpha lactalbumin. Option second है restriction enzyme are used in isolation of DNA from other macromolecules. Option third है downstream processing involves separation, purification and packaging of desired product. Option fourth है disarmed pathogen vectors such as Thai plasmid transfer foreign DNA into the plant host cell. So incorrect statement पूछा गया, so answer is this. नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड. कॉलम फर्स्ट कॉलम सेकंड. रोजी केमिकल नाइफ्स टाइप प्लाज्मिड ऑफ ए. सेकंड है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस टाइप प्लाज्मिड ऑफ. इसका हमें करेक्ट मैच करना है. सो रोजी इज अ ह्यूमन अल्फा लैक्टैल्बुमिन. ऑप्शन इसमें सेकंड था स्टेटमेंट रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस केमिकल नाइफ्स डिसआर्म्ड पैथोजन दैट इज टाइप प्लाज्मिड ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेशियंस. डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट. चूज द करेक्ट ऑप्शन. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है Bacillus thuringiensis forms protein crystals which contain insecticidal proteins. This protein, question asked in AIPMT Mains 2011, is activated by acid pH of the foregut of the insect pest. Option second does not kill the carrier bacterium which is itself resistant to this toxin. Option third binds with epithelial cells of midgut of the insect pest, ultimately killing it. Option fourth is coded by several genes including the gene cry. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन थर्ड binds with epithelial cells of midgut of insects,
pest, ultimately killing it. Explanation: bacteria becomes the part of occasional diets of insects. Hence, several bacteria like Bacillus thuringiensis have evolved defense mechanism against insect predation. It forms intracellular crystalline bodies that contain an insecticidal protein called the endotoxin. So the correct answer is third, that is binds the epithelial cells of midgut. Next question है, arrange the following statements with respect to BT cotton in a chronological order. Statement A है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ बैक्टर इनटू द प्लांट सेल. स्टेप बी है, आइसोलेशन ऑफ क्राइजीन विद द हेल्प ऑफ रीफॉर्म with the help of RE from Bacillus thuringiensis. Restriction endonuclease इसकी फुल फॉर्म है. स्टेप सी है, इन्फेस्टेशन ऑफ द प्लांट बाय द इंसेक्ट. स्टेप डी है, एसोसिएशन ऑफ दिस क्राइजीन विद disarm typlasmid of Agrobacterium tumefaciens. स्टेप ई है, बीटी टॉक्सिन इज engulfed by the insect pest. Step F है, binding of the toxin to the midgut cells of insect. Step G है, cell lysis leads to death of the insect pest. अब इसमें से चूज द करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना है. इसका करेक्ट ऑप्शन है बी. बी टू डी, डी टू ए टू सी, C to E, E to F, F to G. Next question है, BT toxin has not been introduced in which of the following plants? ऑप्शन फर्स्ट है कॉटन, ऑप्शन सेकंड है कॉर्न, ऑप्शन थर्ड है पोटैटो, ऑप्शन फोर्थ है पी. इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन फोर्थ, दैट इज पी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग बीटी टॉक्सिन वुड नॉट बी इफेक्टिव. ऑप्शन फर्स्ट है लेपिडोप्टेरा, ऑप्शन सेकंड है कोलियोप्टेरा, ऑप्शन थर्ड है गैस्ट्रोपोडा, ऑप्शन फोर्थ है डिप्टेरा. इसमें पूछा गया था नॉट बी इफेक्टिव, सो द करेक्ट आंसर इज गैस्ट्रोपोडा.